Good afternoon. Yaar, I'm not keeping well these days. पता है. I will have my workshop on 1st November rather than so that all of could join and I can have a long session with them. फिर भी आए हो तो बात करते हैं ना. Most of you are from the same institute. दिवाली चल रहा है ना अभी तो. ज्योग्राफी पे कुछ बात कर लेते हैं. The few things which have been asked in the last workshop and the general questions which are generally asked will be जो मुझे याद आ रहा है. सर, syllabus is very vast. यही आता है ना. Syllabus is very vast and everybody is afraid of it. I am shocked, surprised. कहाँ syllabus बढ़ा है यार. I am able to complete in 4 months and probably faster than the other courses and doing justice to every topic. Syllabus is not vast. It's all about how you approach your geography and it's all about how you are reading and which references you are making. Syllabus में if you go by the number of words, actually it looks very vast. Paper 1 and 2, paper 1 in 10 subtopics and paper 2 again in 10 subtopics. So some 20 topics, oh my God. And even in one topic you find some 30 to 40 words. तो देखने में तो voluminous लगता है. But when you inspect, when you examine, when you have a in-depth analysis, you will find that settlement geography in paper 1 and 2, read them. I'm giving you a small challenge today. You can read paper 1 syllabus of settlement and paper 2 syllabus of settlement. On the both sides, the same wordings are there. Same wordings are there. Meaning topics are the same. Theoretically, their explanation will be the same. What will vary probably will be the examples, the illustrations, the case studies. Because paper 1 will be in the context of the world and paper 2 will be in the context of India. Same wordings hai. So just try to find it out. Find out yourself instead of believing a teacher. You all could be professionals. There has to be a commercial angle in this profession also. We always try to lure more admissions and all. तो ये खुद से judge करना चाहिए कि the prevalent ideas about geography in the existing market is how far it is correct. So when you look at the syllabus, as I said, settlement paper 1 and 2 are similar. Then think of more such topics like population in paper 1 and 2 are similar. Match करके देखो. Paper 1 has biogeography, environmental geography. Paper 2 is having
contemporary issues, same topics have been repeated. Actually, this is one, environmental geography. एक ही topic है, environmental geography. They have created 3 different columns. One biogeography, environmental geography, contemporary issues. उसमें भी वही है, natural disasters है. So these 3 sections are actually one section. When you start reading them and preparing on them, the 3 sections become one. 2 settlement becomes one. 2 population becomes one. Did you get this point? Now you are going to do this exercise by yourself instead of seriously, not believing a teacher. Second thing, syllabus अगर वास्ट लगता भी है, फिर भी कहोगे कि फिर भी पढ़ा है. So I will invite you to look into the GS syllabus and match with geography. Resource in optional, in GS also. Agriculture in GS also, in optional also. Industry, वो भी वहाँ है. Population, society, tribes, human geography, environment, disaster management, everything is across the boundaries of optional and the GS. तो इवन इफ एक छोटा सा इक्वेशन तो बताते हैं. मान लो कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं. इट हैज 100 यूनिट्स फॉर ऑप्शनल. एक और सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट 1. नाउ यू हैव सब्जेक्ट 2. दिस इज आवर ज्योग्राफी. आई एम कंपेयरिंग विद एनी अदर सब्जेक्ट. नाउ इट हैज से 120 यूनिट्स. ज्यादा सिलेबस है. But 80 units are common with GS. And here you will find someone will claim 20, 30. Hardly any other subject can claim 20 to 30 units. And if you are taken Hindi Sahitya or any other such subject, तो उसमें कहाँ मैच करता है? वो तो हार्डली 0% मैच करेगा अगर तुमने लिटरेचर लिया है. तो फाइनली तो यार, here you are studying 100 unit plus GS, यहाँ पे 120 unit, GS minus 80. So I really seriously, I can't understand when I made a comeback in Karol Bagh after 6 years of my extinction. मैं extinct हो गया था यहाँ से थोड़े टाइम के लिए. So I came back only to find that there are so many ruthless ideas running against such a great, magnanimous subject. The subject which actually blasted results since 2007 to 15. Out of 900, 300 results will be, this on a UPSC website. Out of 900, 300 results alone will be from geography. And now I am finding that even people with scientific temperament, they have science background, they have economics background, they have कुछ भी commerce background, ये लोग हर हाल में geography लेते थे, unconditionally. They will take geography as an optional. They have been, I am finding then that they are taking abstract optionals, totally abstract. They can't perform. But we all go by the winds. Everyone is taken by certain storms, certain rumors. I'm really finding difficult even to convince students of science कि अरे यार तुम्हारे लिए ज्योग्राफी बना है भाई. You were the one who actually got all these 300, 400 results in civil services. It was actually it is the student community. A student ही तो result देता है ना. It's about your performance. And your performance is directly proportional to your aptitude, your temperament, your insight in a subject. One of the reasons why I wanted to join my fate also, Next IAS, because I thought a lot of engineers will be flowing from ADZ. And now again I can
bring that glory of geography back by producing results, and that is how I dreamed, and it's going on. Last batch, I'm having massive number of students, and all of them are still intact in the class, all of them doing well. अभी सब लोग नीचे टेस्ट लिख रहा है. So I'm really excited about results in the coming future. Maybe in a year or two, you will start again finding. I just hope, I'm being positive, that results will start flowing. And this cudgel is on your shoulders also. ये भार तुम्हारे shoulder पे भी जाएगा to produce result. I have been really hungry for success, not in terms of a compact class, rather how many results I got. That is where we teachers are testified. I taught something whether it came in the examination or not. Every question my students can solve or not. That's the challenge I take up always in my life. Everything in the class will be explained, will be discussed, will be dictated. Language, मेरा language लिखना होगा. I command the language. I leave nothing for my students. Model answer बनाओ. नहीं, मैं बनाऊंगा. I will create model answers in the class. So with all this, I'm expecting huge result and geography finding its old glory. Okay, coming back to this discussion, the syllabus of geography, trust me, is one of the shortest among any optional. मैंने 4 महीने में बहुत अच्छे से खत्म कर दिया है. I'm left with hardly 1 or 2 topics now, and in 2-3 long day classes I will complete my last batch. And syllabus को एक बार आप भी पढ़ करके देखो, because you have to go through from word A to Z of your syllabus. Read it, start underlining, then you will have a feel. So when you underline geomorphology, you will have topics like mining and environment. तुमको लगेगा कि environmental geography is also part of geomorphology. You will find geohydrology. Such topics are there. Then you will realize, environmental geography is in geomorphology. Similarly, when you read climatology, the syllabus of climatology, you will find topics like global warming, climate change, urban heat island. So when you go through the syllabus by yourself, then you start realizing that every topic of geography seems to be like GS and so relevant. And when you go into the GS paper, this year, आज इस साल का ही GS paper देखो, go to paper 1, go to paper 3. In paper 1, the topics which you call Indian society, for a geography optional students, it's human geography. We teach the same Indian society in human geography. We also teach urbanization. We teach globalization. Sab syllabus में है. We teach population, attributes of demographic attributes, migration, women, feminism, सब है हमारे geography में. लेकिन condition ये है कि you have to verify all this by yourself rather than listening to anyone. So please go into the syllabus today and try to find out how much environmental science will be covered in geography. 90% of it. 90% of it will be covered. 10% छोड़ दिया मैंने. And then how much Indian society will be covered? Most of it. 95% of it. How much geopolitical? Paper 2 है ना? So we also have political geography. So syllabus of political geography and paper 2, how far they are similar? Do analysis by yourself. हम तो करेंगे, 1 नवंबर को शायद करेंगे बैठ करके.
लेकिन अभी आप एक बार खुद करके देखो कि when in paper 2 interstate river water dispute पढ़ना है ज्योग्राफी में, international boundary of India and the dispute, India and South Asia, India and the world. Just go through the geopolitical part of geography. कितना interlinking of rivers issues सब पढ़ना है. Environmental issues related with river, linkages of river, सब करना है इसमें. So when you look at take a holistic view of the syllabus, we start realizing that most of the current relevant topics from Indian society to environment to the world phenomena, it's all impregnated, all are found in your geography optional syllabus. And when you deal with the syllabus holistically, it will cover your very close to 300 to 500 marks in GS. And trust me, this is true. Have you seen the essay paper this year? क्या है फर्स्ट ऐसे क्या लिखा था? फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बताओ which discipline will give you the exact idea on it? Forest and economic development. Is it part of economics? No. Is it part of coveted? No. Political science? No. Sociology? No. Anthro? No. I'm not being critical to any optional. Directly है यार ये. सीधे सीधे ऐसे उठा करके दे दिया है. अब एक ज्योग्राफी ऑप्शनल को एडवांटेज तो मिलेगा ही. ऑल कैन राइट, आई एम नॉट सेइंग ऑल कैन राइट समथिंग, बट यू विल हैव लिटिल मोर एडवांटेज. वन essay completely for you. When you look at the other essays, there is a tinge of philosophy always. बाकी सब philosophical है. और हम ज्योग्राफर कम, फिलोसफर ज्यादा है. और क्लास में कुछ ना कुछ तो अपना चलता ही रहता है. Deliberately चलता है. I'm a professional. I know what exactly I'm telling or talking to my class. I deliberately do it because teacher's role is not to just teach the syllabus and go. My idea of being a teacher is to stimulate your mind, to enhance, to strengthen your conviction about whatever you feel. So I raise a topic, I raise an issue, leave it for you to decide what is good and bad. I never say this is right or wrong. The teacher's duty is to stimulate you, and I keep doing it. Then my optional batch becomes my home, and I strike emotionally. I do my emotional investment into my students because then I receive greater trust from them. And when the student start trusting a teacher, this teacher is also forced to work harder. नहीं, बिजनेस करो तब भी इमोशंस रखो उसमें, वैल्यू सिस्टम रखो उसमें. बिना इथिक्स वैल्यू सिस्टम के न बिजनेस होता है, न क्रिकेट होता है, न कोई स्पोर्ट्स होता है. लिएंडर पेस का नाम सुने हो? लिएंडर पेस, whenever he was playing for himself, he could not cross even 1 or 2 rounds, but he was playing Davis Cup for his country. Emotions running high, he could beat anyone. He could beat number 1 rank of his time. You don't know who is Leander Pace? A tennis star. This is what happens when you are. चलो ठीक है, professionalism तो है ही. So we will be connected professionally. I have a duty to perform. You have a duty to learn. But when we do emotional investment, when we get ethically connected with each other, when we create that bond, then the outcome is something which is unbelievable. And I think that is what got those 300 results during those times, those great times. Same, मैं वही काम फिर से कर रहा हूँ. Investing time, investing all my ideas, investing my everything in my students. Not really worrying about when the course will be completed. But one thing I decide, I always come on time. आज मैं 1 minute late हुआ हूँ. लेकिन I never get late. You can ask any of my students. I never get late in my life. B, I have a superb plan. I know when I'm starting, when I will be finishing. That's my duty, without telling you.
never demand sir कब खत्म होगा, that irritates me. You have given your life for 4 to 5 months, 4 months, 5 नहीं बोला मैंने, 4 बोला, 4 है बिल्कुल. You have given your life 4 months, मेरे लिए allot कर दिए हो, तो वो बस मेरा है. And बीमार हो गए तो फिर 5 to 6 days, last 7 days I'm ill, I'm still driving my classes. I'm not saying cancel the class because I love this profession so much. और बीमारी तो ठीक हो जाता है आप लोगों का मुंह देख करके भी, कि इतना लोग बैठा हुआ है तो. अच्छा, first fear, the fear which you have, please share with me. अगर anyone is still indecisive, क्या करूं sir? You have certain fear running in your mind because some of the fears will be automatically warded off when I talk about geography. So one of the prevailing fear is the syllabus, size of the syllabus. Size is, मैंने जैसा कहा, is very limited, or it takes 120 days for the completion. The syllabus has been repetitive syllabus है. क्यों ऐसा बनाया है मैं भी नहीं समझता. देखो पेपर 1 में, रीड पेपर 2, सॉरी पेपर 2 पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी लिखा है, फिजिकल सेटिंग इंडिया, एंड देन द लास्ट टॉपिक्स आर फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, ऐसे लिखा हुआ है. अगेन फ्लड एंड ड्राउट इज रिटन इन कॉन्टेम्पररी इशूज, फ्लड, ड्राउट, फिर वैसे ही लिखा हुआ है. इतना रिपीटेशन है ना सिलेबस का कि सिलेबस वॉल्यूमनस दिखता है नहीं वो. प्लस क्या होता है कि मान लो कि आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, कि टेकिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट इज अर्बनाइजेशन. नाउ अर्बनाइजेशन has been defined by UN Charter. It has been defined by some of the great geographers. So if a teacher starts with what is urbanization according to UN Charter, it goes straight to you. But when I start telling you the stories, when the human group started moving from the village and the barter started and the exchanges and the trade and blah 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 and the transportation, unnecessarily the topic becomes very lengthy. समझ में आया? हम उसको लेंदी नहीं बनाते हैं कभी भी, कि कहानी चल रहा है अर्बनाइजेशन का और सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो रूरल एरियाज में क्या चल रहा है. स्टोरी टेलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी हैज ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस. The things are well defined in geography, well structured in geography. It's all about the approach, how you approach geography. And always remember one thing, very vital, that you have to write 100 to 200 words hardly. The maximum you have to write will be 200 words. Some questions 150 words. So even if you know a lot, you are a scholar, ultimately you have to deliver only in 100 words, 200 words. So precision is the hallmark of geography. Accuracy and precision, that will be the hallmark. It has to be the hallmark of teaching also. Ki how precise and accurate you write, how you interpret a topic, how you can reproduce in your words, well-defined words. There are two parts of geography. I tell you something I recalled immediately. There are two parts of geography. One is very structured and scientific. Geography is not completely science. So physical geography part and some of the theoretical parts will be much like science. 60%, 70% will be like science. जैसे मान लो agriculture है, तो in agriculture is not arts. It is a bit of science plus economics. समझे? वो आर्ट्स नहीं हो जाता है जाकर के. लेकिन उसमें कुछ टॉपिक, जैसे मान लो लैंड रिफॉर्म है, तो लैंड रिफॉर्म विल बी हैविंग लिटिल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देयर. So 40% of geography will be like arts and 60% will be like science. So it's a great amalgamation of arts and science. Both, even if you have background in arts or science, it doesn't matter to the subject actually. Syllabus के लिए बिल्कुल आप मत सोचो.
सिलेबस बहुत लिमिटेड है एंड 70% syllabus of geography will be used in your GS, 70%. Or I'm telling you all this on record. See the paper 3 of GS, check out. See your paper 1, paper 2. You can conclude by yourself. एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि सिलेबस बिल्कुल वास्ट नहीं है, 4 months कोर्स है और एवरी डे वी विल हैव 2.5 hours सेशन. उसमें I always exceed by 5 to 10 minutes. But by coming on time, every day I save 15-20 minutes. ये आप समझते हो ना कि if I am on time, 2:30, I am right here, I am saving those 10 minutes. So my classes, which are 2 hours 40 minutes, is effectively a 3 hours class. उसका effect 3 घंटा चला जाएगा. Okay. Having said that, I would like to take up your questions. आप बताओ क्या मन में है ज्योग्राफी को लेके? Any fear? Anything you want to ask before you start learning? Okay. नए क्वेश्चंस किस बेस पे आ रहे हैं? मैं एक सच बताऊं, you asked a really valid question. His question is that the questions which are asked in mains examination, they are not from books. कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से लिखा जाए? There is only one source, my class notes. अब इस बात का बुरा मत मानना, ये सच है. जो हमारा पुराना बैच है ना, उससे आप एक बार जाकर के इनपुट ले लो कि ये सच है या नहीं है. बिकॉज ज्योग्राफी इज नॉट इन बुक्स. देयर इज नो बुक इन ज्योग्राफी. दिस इज रियलिटी. व्हेन देखो क्या होता है, व्हेन ए सब्जेक्ट इवॉल्व्स एंड ए सब्जेक्ट स्टार्ट परफॉर्मिंग, द प्रोफेसर्स who construct the question paper, they start asking something beyond the books. जैसे there is a story of public administration. Public administration was doing really well in civil services. फिर क्वेश्चन खत्म हो गया वहां से. अब उसके बाद वो क्वेश्चंस क्रिएट करके पूछने लगे. तो बुक्स के बियॉन्ड क्वेश्चंस चला जाता है. बुक्स के बियॉन्ड क्यों चला जाता है? क्योंकि वो क्वेश्चंस पिछले 20 साल में पूछा जा चुका है. अब वो दैट विल नॉट बी रिपीटेड. सो the academic team of UPSC, they start creating questions relating more concepts, and that is what exactly we do in the class. जैसे आपको बताते हैं हम कि there is a question this year, rocks and mineralization. रॉक सिस्टम से मिनरलाइजेशन कैसे हुआ, ये मैंने 8-5 साल पहले भी पढ़ाया हुआ था, अभी भी पढ़ाया एग्जाम से. देखो वहां से आया. And if you are trying to find rocks and mineralization in Savinder Singh or any good book, it's impossible. So I have especially prepared booklets, handouts, class notes. Class notes will be the real source of your questions. Class notes को पढ़ना है, उसी को constitution मान लेना है. That's the holy book for you. और वो क्लास नोट्स और हैंडआउट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है. क्योंकि सिलेबस वेग है, उसमें लिख दिया इंडिया का स्पेस प्रोग्राम. अब बताओ क्या पढ़ोगे? वो तो साइंस टेक में लोग पढ़ते थे ना. तो एक ज्योग्राफर समझता है कि यार वो कार्टोसेट ही पूछेगा, वो लैंड सर्वे रिसोर्स सर्वे ही पूछेगा स्पेस प्रोग्राम में. अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग दैट एवरीवन इज, अरे स्पेस प्रोग्राम में क्या पढ़ना है, पूरा साइंस पढ़ लो. लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा कार्टोसेट, फिक्स्ड है, वही आया. तो ये देखो एक टीचर का विजडम होता है कि वो कैसे सिलेबस को एक्सप्लेन करता है क्लास में. ट्रस्ट मी, द ऑप्शनल्स आर एक्चुअली गाइडेड बाय द टीचर्स. जीएस तो अपने से स्टूडेंट करता है बहुत कुछ, बट ऑप्शन में जाकर कहीं ना कहीं टीचर्स रोल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Questions are not direct. Questions mostly are conceptual. I'm telling you one very important fact. People are
मैंने तो पढ़ाना छोड़ दिया था, but what happened in last 6 years, people started teaching only current affair in geography. उनको फियर हो गया कि करंट अफेयर से ही सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बट कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं होता है. देयर इज ए क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आ गया स्मार्ट सिटी, तो फॉर ए कॉमन मैन हु हैज नो बैकग्राउंड इन ज्योग्राफी, ही विल फील ओ स्मार्ट सिटी मोदी जी. अरे यार, इट वाज ग्रिड आयरन पैटर्न मॉडल ऑन विच ली कार्बूजियर कंस्ट्रक्टेड चंडीगढ़. वो जो मॉडल था ना, वो भी तो स्मार्ट सिटी मॉडल ही था. उसी में विद सर्टेन मॉडिफिकेशन उसी को तो अप्लाई करना था. लेकिन अब ग्रिड आयरन पैटर्न का मॉडल पता ही नहीं है लोगों को. दे स्टार्टेड राइटिंग जीएस टाइप ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी तो खत्म ही कर दिया लोग, मार्क्स नीचे आ गया. दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग बिकॉज ज्योग्राफी का कॉपी कौन चेक कर रहा है? प्रोफेसर कर रहे हैं ना, जेएनयू के, डी स्कूल के. वो तो कोर ज्योग्राफर है, वो हार्ड कोर ज्योग्राफर है. ही वांटेड टू सी कि ग्रिड आयरन पैटर्न कहाँ लिखा है इसने, उसका मॉडल कहाँ बनाया, वो डायग्राम कहाँ है. एंड यू गाइज स्टार्टेड राइटिंग व्हाट? करंट अफेयर. ये योजना नीति आयोग ने किया, इतने सिटीज में हुआ, ये बोगस राइटिंग शुरू हो गया. एंड दिस बोगस राइटिंग हैड कंटिन्यूड फॉर लास्ट 6 years. यही बोगस राइटिंग चल रहा है. तो I have guided my last 2 batches here that please go catch up this hardcore geography, traditional geography. उसी का बेस बनाओ पहले. और these current affairs are like pudding on a cake. आप समझे हम क्या करना चाह रहे हैं? तो आपको पहले तो ज्योग्राफी को ही स्ट्रेंथन करना होगा. ज्योग्राफी में अर्बन मॉर्फोलॉजी पे देयर आर 5-6 models which has to be taught first, learned, and anything asked in the name of current affair. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इनलैंड वाटरवे है या रेल रोड कॉम्प्लीमेंटैरिटी है. नाउ दिस इज हार्ड कोर ज्योग्राफी, बट क्वेश्चन विल नॉट बी ऑन रेल रोड कॉम्प्लीमेंटैरिटी. They will ask you something like relating with how the rural development can be connected with the inland waterways, how the ports are significant economic magnets for developing the hinterland areas. ऐसा कुछ पूछ दिया. hinterland मतलब सराउंडिंग एरिया, कि पोर्ट कैसे रूरल डेवलपमेंट को लाएगा, ऐसा क्वेश्चन बना दिया. नाउ फॉर ए कॉमन मैन, उसको लगेगा कि पोर्ट में माल आता है, एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, ऐसा लिखेगा वो सोच करके. बट एज ए ज्योग्राफी टीचर मैं आपको बताऊंगा ना कि देयर इज ए मॉडल ऑन इट, there is a theory on it, these are the diagrams to be constructed. वो हार्डकोर ज्योग्राफी पढ़ोगे तभी करंट तुम्हारे समझ में आएगा. ये मेजर डिफरेंस आया इन लास्ट 6 years की. पीपल ड्रिफ्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल, द हार्डकोर, द वेल डिफाइंड ज्योग्राफी, they drifted from the well defined geography towards current affair. करंट अफेयर से कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ एक टेल रहता है क्वेश्चन में. मान लो क्वेश्चन है ना, तो उसका एक छोटा सा टेल रहता है. आई विल टेक अप सम क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस समडे कि देखो कैसे करंट अफेयर नहीं था ये. दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली ट्रेडिशनल ज्योग्राफी विथ ए बिट ऑफ करंट अफेयर. ज्योग्राफी से 330 मार्क्स, 339 आया है. 300 प्लस नहीं आया तो ज्योग्राफी लेने का फायदा क्या है, समझे? 300 अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग ज्योग्राफी? एंड देखो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफिक्स, ज्योग्राफी मीनिंग जियो प्लस ग्राफिक्स. तो यू हैव टू ग्राफिकली प्रेजेंट योर आंसर. मैं ऐसा बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को इन द कमिंग टाइम्स कि ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन के बिना आप ज्योग्राफी नहीं लिख सकते. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए ज्योग्राफी में. अगर आप कुछ अर्बन प्रॉब्लम्स भी लिख रहे हो उसमें भी व्हील डायग्राम बनता है. ज्योग्राफी में कार्टोग्राफी इज ए सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. स्टैटिस्टिक का एक पेपर होता है ज्योग्राफी में.
तो आप सोचो कि ज्योग्राफी तो स्टैटिस्टिक्स का यूज करेगा, डायग्राम्स का यूज करेगा, तभी तो उसका ब्यूटिफिकेशन होगा, तभी तो प्रेजेंटेशन होगा ना। अब लोग सिर्फ लिखना शुरू कर दिए, करंट 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 लिखना, तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है कि व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस। ही वाज लुकिंग फॉर सर्टेन ग्राफ, सर्टेन बार डायग्राम, सर्टेन कुछ देखना चाहता है वो ज्योग्राफी में। एंड व्हेन ही डजंट फाइंड, ही सेज ओके 4 आउट ऑफ 10। ये प्रॉब्लम चल रहा है ज्योग्राफी में। 300, I mean, in my first attempt only I scored 426 out of 600. I think that will be still the highest ever. And then my student Mangesh Ghodiyal, ऐसे कुछ नाम था उसका, he got 4th rank. He's in Uttarakhand now, doing so well. कोई जानता है उसको? हाँ, बात करना ना कभी। वो 4th rank मेरा ही स्टूडेंट था। He got the result, he scored 400 out of 600. He got the rank, he called me, you are my god sir. हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, but since you said you know him, तो एक बार बात कर लेना। कि I'm with same Alok Ranjan now, but he was in 2010-11 and I was young. मेरा सारा batch, I have very profound memory of that particular decade. So I talked about syllabus, you raised this very valid question. Then few more things you want to ask? ड्राइंग्स तो आपको सीखना होगा, गुड और बैड जैसा कुछ नहीं होता है। देखो, दो तीन चीज आपको बताते हैं, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। You have to learn one world map, how to create a world map. Then you have to learn to create an India map. Your 80% diagram making is over. समझे? पेपर 2 में क्या बनाओगे डायग्राम? इंडिया का मैप ही तो बनाना होता है। So how to make India map in 20 seconds, 30 seconds, that's a challenge. ठीक है? Easily, it can be easily done. कुछ छोटा मोटा मेथड्स है, अलाइनमेंट बताते हैं हम बस, और उसी के बेसिस पे आप बना दोगे। तो एक तो मैप बनाना है, दो मैप, सिर्फ दो मैप, इंडिया मैप एंड वर्ल्ड मैप, दो चीज सीखना होता है। थर्ड, एक कुछ छोटा मोटा डायग्राम्स, दे आर कॉल्ड ए स्केच डायग्राम्स। 2 maps and 1 is sketch diagram. What is a sketch diagram? So मान लो कि you have to draw the plate movements. Now this is called a sketch diagram. So this is the plate, this is the trench, this is the plate which is moving down. Can't you draw all these straight lines? यही तो करना है। तो ज्योग्राफी में फाइनली क्या ड्रॉ करना है आप बताओ? इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप एंड द स्केच डायग्राम्स। ये स्केच डायग्राम्स आर नॉट कैरिकेचर्स, और पेंटिंग नहीं करना है ज्योग्राफी में। सम वर्टिकल स्ट्राइक्स, सम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स, सम ऑब्लिक स्ट्राइक्स, ओवर। वेयर इज द टाइम? यू हैव टू राइट सम 5 क्वेश्चंस, 5 into 4, मान लो कि लगभग 20 क्वेश्चन लिखना होता है। 20 क्वेश्चन लिखना है, तुमको 3 hours आर विथ यू, तो कैसे डायग्राम तो बना सकते हो? कुछ नहीं करना है, नो चेंज इन कलर, कलर वलर कुछ नहीं चेंज करना है। अपना जो जिससे तुम लिख रहे हो, सेम ब्लू पेन, सेम डायग्राम। दैट इज व्हाट आई डिड, आई रिमेंबर, एंड आई वाज गिफ्टेड a lot of marks, miraculous marks. I didn't use any color pencil, didn't use any brush, कुछ नहीं किया था मैंने। So your fear taken care of. हाँ, next कुछ और पूछो। You. NCRTs are basically index. NCRTs, his question is role of NCRT. NCRTs are index. They indicate, they take you in a certain direction. For example, if it is writing Big Bang Theory,
meaning some questions from the creation of the universe could be asked. It could be asked on the formation of a star, it could be asked on the formation of earth. So they are index. समझ में आया? वो indicate करता है कि इस direction में बढ़ो. Even for GS people, I suggest direct questions may not be asked from NCERT, but they are also index for general studies. And whatever is written in the NCERT, you can search on the Google, put some more facts back into the NCERT, enrich your NCERT, then you can always maximize the advantages of reading NCERT. This is the best way of learning NCERT. And for geography, I will give you a combo of old and new NCERT. And in my classes, don't read anything. मुझे ऐसा blank sheet चाहिए जिसपे मुझे script लिखना होता है. जो लोग पहले से MA ज्योग्राफी होते हैं ना, वो मेरे क्लास में बहुत क्या अच्छा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं. उनको 2-3 दिन तक अनकंफर्ट रहता है. वो प्लेट पता नहीं क्या पढ़े हुए हैं. वो प्लेट मतलब क्रस्ट समझ रहा है और हम उसको बता रहे हैं कि यार वो लिथोस्फीयर है, कैसे है, बहुत सारा चीज समझा रहे हैं, तो उसको कष्ट होने लगता है. वो स्ट्रगल कर जाता है क्लास में. सो मेरा बेस्ट स्टूडेंट वही रहता है हु कम्स विथ ए ब्लैंक शीट. एकदम कुछ नहीं पता सर, ज्योग्राफी नहीं पता सर, जियो मतलब क्या सर, वहीं से शुरू करो. आई स्टार्ट विथ ओशनोग्राफी जनरली एंड आई स्टार्ट विथ व्हाट इज ओशनोग्राफी. सो ओशनोग्राफी इज द साइंस ऑफ द सीज. So what is the meaning of sea? यहाँ से शुरू करेंगे. And I always assume that you know nothing. And if you know anything, keep improving. Work on it. Because I probably know everything. हम तो सब जानते ही हैं. मेरा तो प्रोफेशन है. MSc मैंने भी किया है ज्योग्राफी में, तो मेरा सब्जेक्ट भी है, हार्डकोर है. प्रोफेसर से मेरा एसोसिएशंस है. आई एम राइटिंग 12 books on geography being published by S. Chand. S. Chand सबसे बड़ा पब्लिशर है आपके देश का. I was invited for geography lectures for lecturers of this country, UGC program में, and that was way back in 2011. आप देख सकते हो दिल्ली दूरदर्शन व्यास चैनल पे मेरा कुछ कुछ लेक्चर्स है पड़ा हुआ. आपने देखा है? यूट्यूब पे से मेरा व्लॉग देखते हो? दिल्ली दूरदर्शन व्यास चैनल आलोक रंजन का ज्योग्राफी, उसमें भी आप दिखेगा मेरा बड़ा सा मूछ है एंड आई विल वे 120 kg. काफी हेवी थे उस समय, अभी भी हेवी ही हैं, बट उस समय और हेवी थे. यू कैन सी, आई मीन आई एम ए, क्या बोलूं खुद से यार, आई एम ए वेल रिकॉग्नाइज्ड ज्योग्राफर ऑफ योर कंट्री. Officially, unofficially, by Delhi Doordarshan, by UGC, by everyone. तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से उठ करके पढ़ाना शुरू कर दिया, यूपीएससी में नहीं हुआ इसलिए पढ़ा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 4 इंटरव्यू दिया, ये दिया. मैंने इंटरव्यू दिया. आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट. इट मस्ट गो ऑन रिकॉर्ड. आई गॉट वेटिंग लिस्ट. देन आफ्टर 3-4 years सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया. ये दिस पीपल नो, ये जो पॉलिटी में है पढ़ाते हैं ना, he also resigned from defense account and he has joined. A lot of people are resigning and joining this profession. I don't know क्या हो रहा है. Money matters. हाँ यार, money cannot buy happiness, but without money there is no happiness. बहुत बड़ा सच है लाइफ का. और I have really lot of complaints against the respective governments because they are giving such meager salary to the bureaucrats. Hardly they get 1 lakh or 1.5. And even if they have 2 kids, the schools are demanding 20,000 each. तो 40,000 तो चला जाएगा उसका बच्चे के सैलरी में. Then you have a wife. She has her demand. अरे वो एक रियलिटी है लाइफ का. इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोलो सर शादी नहीं करेंगे. करोगे सबसे पहले दौड़ करके. कोई बचा है आज तक?
बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। वही 1 नवंबर को मेरा तो बैच खत्म होगा ना, जैसे आई विल हैव वन वर्कशॉप ऑन 1 नवंबर, देन आई विल बी स्टार्टिंग द बैच, तो that batch starts with the basic itself. Now learn geography is a subject which is multidisciplinary. It has oceanography that has come through marine geology, hydrology, सारा concept लग रहा है। तो for oceanography I will give you basic classes. For climatology I will give you separately basic classes. For geomorphology you will need separately basic classes. There is nothing like geography basic classes. आप समझे इस बात को कि ज्योग्राफी में बेसिक क्लास नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी डन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। से आई हैव टू बिगिन सेटलमेंट ज्योग्राफी, आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज सेटलमेंट, वहीं से शुरू होगा वो बैकग्राउंड। एवरी माई क्लासेज आर डिजाइन इन द सेम फैशन कि बिफोर बिगिनिंग ऑफ एवरी फ्रेश टॉपिक इनिशियल 1 or 2 क्लासेज विल बी ऑन द बेसिक। ओशनोग्राफी में तो 3 क्लास है, जियोमॉर्फोलॉजी में 4 to 5 क्लासेस है। तो इंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, व्हाट इज लैंड फॉर्म, हाउ टू क्लासिफाई लैंड फॉर्म, व्हाट इज क्रस्ट, हाउ टू डिवाइड द क्रस्ट, हाउ क्रस्ट वाज ओरिजिनेटेड। This goes for 5-7 days. Then suddenly you will come to continental drift theory and plate tectonics and the tectonic movements. Geography is not a subject you can start with plate tectonics. और a student बोलेगा wow, ज्योग्राफी में जीएस में पढ़ा ना तुम लोग, you were struggling for day 1, 2, 3, 4, suddenly on plate tectonics day it all opened, oh यही तो था, है ना? So some of you might have a feeling of it also, अरे यार it's like coconut, ज्योग्राफी is like coconut, ऊपर से इतना कठोर है ना, very hard to break, but when you break it the sweet water and the delicious fruit. So you have to show some patience geography में, even in GS you require some patience for initial few days. But remember one thing, geography once goes inside you will be within you forever. You can never liberate yourself from this subject. This is the magic of geography. एक बार geography दिमाग में घुस गया ना, निकल नहीं सकता है, क्योंकि it's such a well structured science. What is plate? You will have a fair amount of idea, exact idea, accurate vision. ये plate है, उसमें ये नहीं है कि what is marriage, abstract नहीं है ना, what is suicide, what is psychology, ये सब जो होता है ना बड़ा वेग सा होता है कि उसमें ये वेग सब चल रहा है, इसमें सब क्लियर है। Even what is a village? कोई पूछेगा what is a village to a sociology person, he will say it's a community of सेंट्रीपिटल फोर्स, कम्युनिटी लिविंग, ये वो। हम लोग बोलेंगे इट्स ए क्लस्टर ऑफ मोर देन 10 हाउसेस। डिफरेंस समझ में आया? कोशिश करो समझने का। ज्योग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में क्या डिफरेंस होता है? ए ज्योग्राफर विल डिफाइन हैमलेट, ए क्लस्टर ऑफ 3 to 9 हाउसेस विथ दिस काइंड ऑफ स्पेसिंग पैटर्न। स्पेसिंग मतलब उसका एक डेंसिटी होगा, उसका एक इंडेक्स होगा, उसका एक फॉर्मूला होगा कि व्हेन इंडेक्स I is equal to 1 then you have the minimum density. When I is more than 2.0 you will have a village. When I is less than 1 इसका मतलब है कि there is no village existence. कहीं कहीं घर बना हुआ है, there are farm streets. ये ज्योग्राफी होता है कि हम लोग आर्ट्स को भी साइंस में कन्वर्ट कर देते हैं और एकदम दिमाग में। इसीलिए तो मुझे शॉकिंग लगता है यार कि हाउ कैन पीपल हु लर्न इंजीनियरिंग किए, वो सब किए, वेयर आर दे नाउ, कहाँ चले गए वो, क्या हो गया उनको, वो क्या कर रहे हैं? मतलब वो लोग अगर आए तो फिर से वो बूम करे ना रिजल्ट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मालूम क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाला भड़क जाएगा, आर्ट्स वाले को लगेगा कि मेरे लिए नहीं है क्या। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ना व्हेन यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द मॉडल्स, थ्योरीज, द क्वांटिटेटिव मेथड्स इनटू इट, तब ये इंटरेस्टिंग होने लगता है।
एक विलेज का डेफिनेशन, एक ट्राइब, मैंने अभी 3 दिन पहले पढ़ाया, हु इज ए ट्राइब? आई आस्क्ड द क्लास, दे सेड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ट्राइब. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिसाइड डिफाइन ट्राइब, कोई डेफिनेशन नहीं है ट्राइब का. आई गिव द राइट 6 क्राइटेरिया फॉर ट्राइब. ट्राइब का 6 क्राइटेरिया है. क्या है? ए, उसका प्योरिटी ऑफ रेस होगा. आप समझे? प्योरिटी ऑफ रेस मतलब ही विल बी आइदर ए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और ए मोंगलोइड. वो खिचड़ी नहीं होगा जैसे हम लोग हैं. ही इज नॉट ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेसेस. समझे? उसका सेकंड क्राइटेरिया आप बताओ. 6 मैंने लिखवाया था. सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सोसाइटी, उसका सेंट्रीपिटल आउटलुक होता है. और मुझे नजर पड़ गया कि एक, व्हाट यू आर डूइंग हियर? टेस्ट कंप्लीट हो गया तो बैठ गए. ओके, नो प्रॉब्लम. बाकी याद नहीं है. अब बताओ ट्राइब का डेफिनेशन 6. क्या क्या क्या? ये तो मत बताओ, वो वेल डिफाइंड है. Not I'm asking. I'm not asking all that. Geographers have defined 6 criteria. All I'm trying to tell you that it's such a well-structured subject. इसमें वेग कुछ नहीं है. What is culture? पता है क्या? A geographer define culture as nothing but technology. तो लोग बाकी लोग करते रहोगे. कल्चर क्या है? वे ऑफ लिविंग, तो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, तो कस्टम्स, तो ये वो. इतना भाषण ही नहीं ज्योग्राफी में यार. ज्योग्राफर्स विल डिफाइन कल्चर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. हाउ टू एक्सप्लेन इट? सिंपल. पैलियोलिथिक एज वाज ए कल्चर. इट बिकेम नियोलिथिक. टेल मी व्हाट चेंज्ड? टेक्नोलॉजी. इट बिकम्स आयरन एज. व्हाट चेंज्ड? टेक्नोलॉजी. ये ज्योग्राफी है. एंड दिस ज्योग्राफी इज मिसिंग. मेरा वाला ज्योग्राफी खत्म हो गया था 5-6 साल से. Don't worry about the syllabus or you are a beginner or anything. आप पूछो. Wrong. This is the wrong perception. And that is, this kind of perception has actually damaged the subject. This is the perception which the other people created. Your seniors created. जब मैं क्या बोलूं बार बार, जब मैं चला गया यहाँ से, तो इसके बाद ही तो ये परसेप्शन बना दिया गया. क्योंकि हार्डकोर ज्योग्राफी तो कोई था ही नहीं किसी के पास. परसेप्शन बन गया ऐसा. मैंने स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल दिया ना आपको. ये परसेप्शन ऐसा है. इफ यू कैन रेज वन क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2, I will be able to respond much better. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस is a hardcore traditional geography. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो सिलेबस में लिखा हुआ है या नहीं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नया चीज है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो कब से है यार. जब से इंसान जन्म लिया तब से है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज मेंशन्ड इन योर पेपर 2 फिजिकल ज्योग्राफी. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो कोर टॉपिक है ज्योग्राफी का. देखो, यू कैन से दैट सर्टेन टॉपिक्स आर वेरी डायनेमिक. जैसे मॉनसून इज ए वेरी डायनेमिक टॉपिक, साइक्लोन इज ए वेरी डायनेमिक टॉपिक. So every now and then you will have some research. 90% तो सेम है, पहले का ही थ्योरी है, but 10% changes. जैसे सुपर साइक्लोन हो गया. तो रिसेंटली अभी एक थ्योरी आया कि when the tropical cyclones move into the zone of westerlies wind, trade wind में होता है ना tropical cyclone, when they move into the westerlies wind, they will have recurving.
And if they don't have recurring, the same tropical cyclone can become temperate cyclone. नया थ्योरी आया, मैंने पिछले बैच में पढ़ा दिया, मुझे तो पता चल जाता है, हम तो मेंबर हैं ज्योग्राफिकल सोसाइटी के, मुझे तो सारा मेल्स आते रहता है. And this is the greatest advantage you will have, that my geography will be completely official, not self-created or not read from the newspaper articles. हाँ, I have my research scholars with me, पांडे जी, मलिक साहब, 2-3-4 लोगों को मैंने रखा हुआ है juniors को. They are well trained. So whenever there is an article in geography or environment or society और कुछ भी इस तरह का, तो वो मैं हैंड आउट बना करके, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हम मानते हैं सब मेरा है, ये सब का हैंड आउट बना करके इमीडिएटली मिल जाएगा. अभी एक काम करो, अभी बाहर में ना मलिक शायद होगा, अभी एक हैंड आउट बन करके आया है, आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, मैं तुमको दिखाऊं, इतना मोटा है, देखो कैसे मैंने बनवाया. हम बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, लिख मलिक, लिख पहले, टाइटल बना, शुरू हुआ कहां से, फ्लड, शुरू हुआ फैमीन. पेपर 1 पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टॉपिक वाज फैमीन, सो आई थॉट ओके, let's make it so comprehensive that it covers the entire section of GS and takes away the whole need of civil services. So famine पे मैंने आंख बंद करके लिखवाना शुरू किया, लिख, तो famine, drought, drought आ गया इसमें, food crisis, UN charter, how to mitigate food crisis, food security, आया ना. देखो भी मैंने तुरंत मैटर बनवाया, ही वाज जस्ट शोइंग मी कि सर मैंने ऐसे बनाया है, आई हैव गिवन इट बैक, दोबारा बनाओ, थोड़ा और चेंज करना है मुझे. अब when you start finding a link among these topics, then it becomes a very comprehensive documentation, and it will cover your GS, your geography, your essay. So instead of learning topic by topic, connect all the topics, make it very comprehensive, and then get prepared for any kind of question which could be asked. This is the fundamental idea behind it. आप लोग समझे मैंने क्या कहा? एक टॉपिक मान लो है ड्राउट, पेपर 2 में लिख दिया, ड्राउट लिख दिया, पेपर 1 में फैमिन लिख दिया, कहीं और फूड क्राइसिस लिख दिया. दे आर ऑल इंटर रिलेटेड और नॉट. फूड सिक्योरिटी उसी से रिलेटेड क्या है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड क्या है, एपिडेमिक्स. So there is a 10-page comprehensive documentation of these topics now. I know this is what will produce results, because then you have accumulated, compiled material, knowledge. A student उसको, he goes through all those, और एक ही जगह मिलता है तो he is comfortable. Otherwise the topics in geography will be completely disarrayed. कहीं भी सब क्या बोलते हैं उसको, छितराया हुआ है, स्कैटर्ड है वो. और कुछ पूछना है तो पूछो. I will have a mega workshop on 1st November if I feel it is required. हाँ, क्यों नहीं होगा. His question is कि मैंने 10th के बाद ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, and after 10th will I be able to complete geography in 4 months? Why not? You were able to complete geomorphology in 5 days or not? उसी से इंटरेस्ट आया ना. हाँ, तो फिर जब 5 दिन में तुम समझ गए जियोमॉर्फोलॉजी को, तो फिर चिंता मत करो तुम, ये सब, these questions are invalid because any further question after 10th you have no background in geography. I'm very happy that you have no background in geography. I've already responded to it. Seriously, I expect nothing. My only expectation before you join my classes
will be to look into the atlas and try to find out the name of the oceans, the name of the continents, some of the mountains, few rivers, that's it. मुझे इतना ही चाहिए, बाकी तो हम करवाएंगे ही. So I have no expectation कि आप कुछ पढ़ करके आओ. But अगर if you are reading something, then if you have read NCERT, I'm fine with it. But देखो प्रॉब्लम क्या है NCERT में कि it starts with Big Bang theory. It starts with geological time scale. So any newcomer, he turns the first page of NCERT and there is a topic geological time scale, Big Bang. तो वहीं तो अपना सर बैंग कर लेता है कि ये क्या पढ़ने जा रहे हो. नहीं, इसलिए हमको मन नहीं करता है कहने का कि read NCERT then come. Don't read anything and then come. Seriously, don't read anything. That puts me in a better place and you rather in a better place. Because I will be starting with what is an ocean. How to divide an ocean. There are 4 parts of ocean. How these 4 parts were created. What are the significance of these 4 parts. ये ज़्यादा अच्छा तरीका है. Rather than, अच्छा, even if I refer old NCERT, the old NCERT, class 11, it starts with geographical thought. ले वहाँ तो और फंस गए तुम जाकर के. पहले ही पेज में डिफिकल्ट फिलॉसफी पढ़ रहे हो. 50% स्टूडेंट्स ज्योग्राफी से इसीलिए हेट करने लगा क्योंकि दे स्टार्टेड, सबको पता है, देयर इज ए रेटोरिक, स्टार्ट विद एनसीईआरटी. सो दे विल टेक एनसीईआरटी सोशियो, एनसीईआरटी ये हिस्ट्री, एनसीईआरटी पॉलिटिक्स. लगा कि बाकी सब तो ठीक है यार, ये ज्योग्राफी समझ में आ नहीं रहा है. यहीं से इंप्रेशन खराब. So please, for geography, if you want to start with class 9 NCERT. If you want to read one NCERT, what is latitude, longitude, etc., then you can read chapter 1 of GC Leong. GC Leong पता है ना? उसका chapter 1 पढ़ लो. And maybe class 9 NCERT, if you have time and you are not celebrating Diwali, तो तुम पढ़ लो class 9 NCERT. That's the only requirement. Otherwise, come without reading, I'm okay with it. Anything more? ट्रेंड तो तुम चेंज करोगे ना. अच्छा ये बताओ, किसने कह दिया बिकॉज यू आर नेमिंग द सब्जेक्ट्स, तो मुझे थोड़ा पेन उठ रहा है अंदर में. तो मैं भी ओपन ही हो जाता हूँ अब. वैसे इट गोज अगेंस्ट माय एथिक्स. आई ऑलवेज कंसीडर ऑल द ऑप्शनल्स आर सिमिलर एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज ए वेरिएबल कॉल्ड डेस्टिनी. And it will be your destiny and my destiny to be in a classroom for 4 months. It will be your destiny to be with geography or not be with geography. ये तो fixed होता है, मैं ऐसा मानता हूँ. After being a rebel for few years, मैं समझ गया कि destiny है. I tell you something, तुम calculate करके बताना. ज्योग्राफी से कितने लोग, हाउ मेनी पीपल अपीयर इन पीटी. यू हैव टू टुक द डेटा बिफोर पीटी. डोंट टेक द डेटा बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स. पे डेटा नहीं देखना चाहिए. मुझे बताओ, यू हैव पॉलिटिकल साइंस, चलो आपने कहा पॉलिटिकल साइंस. यू हैव सोशियोलॉजी, अभी एक नया बेबी इमर्ज कर गया, एंथ्रो. ये तो अपने आप को साइंस डिक्लेयर करके रखे हुए हैं.
क्वेश्चन साइंस में इसमें कुछ होता नहीं है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो नेग्लिजिबल है, लेकिन अब बहुत सारे ज्योग्राफी लेने वाले इसमें भी चले गए, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और क्या ले लें, हिंदी लिटरेचर। एक आदमी इसी के पीछे पड़ा हुआ है, उसका वश चले तो पूरी दुनिया को यही करवा दे। अब मान लो इस तरह का सब्जेक्ट्स है, हंस क्यों रहे हो? वो कितना, हाउ शेमलेस दिस पीपल आर, कि वो मेरे स्टूडेंट को यार, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ज्योग्राफी, उसके यहाँ इंटरव्यू क्लासेस के लिए गया हुआ था, प्रैक्टिस के लिए, उसको बोल रहा है तुम वही मयंक हो ना। एक वीडियो आया था, वो मेरा स्टूडेंट है, ही इज सेइंग आई स्कोर 260 समथिंग इन ज्योग्राफी, he again he took Hindi literature, he scored again 260 in Hindi also, he didn't improve, जितना ज्योग्राफी में था वहीं रह गया, लेकिन उसका हिंदी चेंज करवा दिया ये लोग। और वो जो मयंक जो पूछ रहा है ना कि तुम वही मयंक हो, दैट मयंक इज आल्सो माय स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 307 in geography, he got the interview call and he is DSP in Amroha। नहीं, राहुल गांधी कहां से इलेक्शन लड़ा था? अमेठी में डीएसपी है, वो असली मयंक द्विवेदी है, जाके कॉल करके पूछ लो। लेकिन मैं इतना घटिया काम करूं क्या? मैं ये काउंटर वीडियो बनाऊं क्या? अब सोशल मीडिया का टाइम है यार, मुझे तो लिटरली रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने में बड़ा पेन होता है कि कोई कुछ, मतलब कितने शेमलेसली बोल रहा है कोई आदमी कि तुम वही मयंक हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों भाई? इसको ज्योग्राफी से हिंदी दिलवाना था। वो जो असली मयंक है जो 307 लाया है, वो ही इज डीएसपी इन। जो रिजल्ट लोग दिखा रहे हैं ना हिंदी वाले सब, वो सब मेरे स्टूडेंट थे यार, रैंक 22, रैंक 74, द रिजल्ट, वो सब ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। दे चेंज देयर ऑप्शनल इनटू हिंदी लिटरेचर लेटर ऑन एंड दे रिसीव्ड सम गुड, प्रोबेबली, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ। ज्योग्राफी से इतना नफरत करवाया गया 3-4 साल। ये बताओ, कोई लड़का सीधे आकर के हिंदी लिटरेचर ले रहा है, you came from a far flung area and you are taking Hindi literature, would you qualify PT? Never. Why these people got rank 18, 22 and 74? Because they had geography previously and they were very good in geography, so they could qualify PT. They could write mains better, and they didn't score even a single marks more than what they did in geography. Yet the credit goes to the great master. खैर छोड़ो ये सब बात। देखो, तो you have political science, अच्छा ठीक है, based on your question एक analysis and you guys are going to verify it also। इसको verify करोगे जाके ये सही है या गलत, क्योंकि हर स्टूडेंट जो भी नया आ रहा है ना, he is only looking into this chart। Tell me how many people are appearing with political science before PT, मतलब PT के पहले डिसाइड कर लिया है this number must be 60,000। आपको पता है this must be 40 to 50,000, 40 to 50 करते हैं, 40 to 50 के बीच में आता है ये नंबर। People who have decided for political science before PT, this is the number। and total number of geography students अभी पता है क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ geography लिखते हैं, how many people will appear? 30,000। numbers have really fallen, it is half of, क्योंकि पता चलता है ना कि political science में कितना एडमिशन हुआ मार्केट में, तो पता चला कि एक ही जगह 3,000 है और ज्योग्राफी के टॉप टीचर के पास 300-400 है। समझ रहे हो ना? तो आइडिया लग जाता है कि लोग ऑप्शनल कहाँ क्या ले रहे हैं। तो 30,000 हार्डली। हिंदी लिटरेचर पूरा हिंदी मीडियम का बेल्ट ले रहा है, यूपी बिहार सब यही है। तो ये
दिस मस्ट बी अराउंड 50,000, मिनिमम भी होगा तो 50,000, दे टेक आइदर हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। और एंथ्रोपोलॉजी में भी दिस मस्ट बी अराउंड 40,000 नाउ, वॉपिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एंथ्रो, एनीवन इज टेकिंग एंथ्रो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एंथ्रो। र्यूमर क्या चल रहा है, अरे इतना पढ़ने से सब आ जाता है, पूरा र्यूमर चल रहा है। अब जब तक ये लोग मेंस देगा ना, तब तक एंथ्रो में देखना क्या होगा, क्योंकि ट्रेन चलता है 2-3 साल, उसके बाद अगला 5 साल लोग उसी हवा में उड़ता है पहले, तब तक तो उधर ट्रेन यूपीएससी पलट देती है। तुम देखो ये रियलिटी क्या है। सोशियो ऑल्सो मस्ट बी अराउंड 50,000, प्रोबेबली मोर देन दिस, ज्यादा ही होगा, 70 भी हो सकता है। And this is not my assessment, this is reality. And these people, this number of people have appeared in the PT examination. ये PT में लोग appear कर गए। अब यहां देखो, ज्योग्राफी 3,000 qualified, others 1,600, socio 1,200, anthro 900, Hindi literature 250. This is how they qualified in PT. So people taking geography are half, almost half, but their clustering in mains is more. आप समझे? बताओ why this clustering is more? Because 35 questions in GS will be from geography. मेरा स्टूडेंट तो सॉल्व कर देगा, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी सब मिला मिला करके। एंड लुक एट द ट्रेजेडी, ज्योग्राफी से पीपल आर टॉकिंग अबाउट पीटी में 8 क्वेश्चन आया, कितना 17, हाँ 8 क्वेश्चन आया। मैं तो बस देखते रहते हैं, क्या कर लेंगे। 8 क्वेश्चन कैसे आया मैं समझ नहीं पाता हूँ। वेटलैंड का क्वेश्चन, क्लाउड का क्वेश्चन, सब इन्वायरमेंट में चला जा रहा है। एग्रीकल्चर भी चला गया, आपके ले ये भी गया, अच्छा अच्छा वो साइंस चला गया, आईआर में चला गया, लॉ ऑफ द सी से क्वेश्चन आया, जियोमैग्नेटिज्म से आया, वो सब चला गया। अंत में बच गया क्या, मैपिंग। तो मैंने कहा ये भी ले ही लो ना यार, हो सकता है कि हिस्ट्री में चला जाए, हिस्ट्री मैपिंग में चला गया, ले लो तुम सब लोग, अब बस लिख दो ज्योग्राफी 0। But when you actually go for the surveys and the results which are coming, the first barricade, look, ये actual equation है यहाँ पे, and final result is still UPSC publishes, the highest results are coming from geography. It will be 141. समझा? जो यूपीएससी ने पब्लिश किया हुआ है वो मैं बता रहा हूं तुमको। लेकिन क्या होगा, यहां से मान लो हो गया 160 या 141 के आसपास में कर लो, 140 ही लेके चलो तुम, 140 ही है। अब परसेंटेज किसका जाएगा हाई, ये बता दो। परसेंटेज तो ये दिखाएगा ना, परसेंटेज ये दिखाएगा कि 10% रिजल्ट्स, ये भी बोलेगा 10% रिजल्ट्स, ये भी बोलेगा कि हमारा भी तो इसमें भी 100 इधर भी आ गया, ये भी कुछ बोलेगा कि मेरा भी 11% रिजल्ट, ये बेचारा बोलेगा अरे यार हमारा तो 7% रिजल्ट आया। तो people often talk about this 10% and 7% result. They forget that because of the push of geography, the more number of people actually get into the mains examination. इतना बड़ा ज्योग्राफी देता है ना पुश, कि मेंस लिखने वालों की संख्या बड़ी हो जा रही है। I'll tell you something. Now all these people who are writing mains, 3,000 जो क्वालिफाई कर गया है, 1,000 are freshers, they don't know what to write. नहीं समझा, इसको पता ही नहीं क्या लिखना है ज्योग्राफी में, and they will get very poor marks. Now that is what goes in the market. मार्केट में फैल गया, अरे यार नंबर नहीं आया, अबे तू पढ़ा क्या था पहले, पीटी तो इसलिए हो गया क्योंकि तुमने फैक्ट एनवायरमेंट ये सब कर लिया था, तो हो गया तुम्हारा। अब देखो ये रियल सिनेरियो है, इसको कैसे प्रेजेंट कर दिया गया। अब वेट अनदर 2 years, my 2 batches are over, third will be your batch,
So I will count after 2024 only, na? By the time you read your GS and you mature as a student, उसके बाद हम देखते हैं, आज they should go on record कि मैं बोला था टॉप 10 में अगर 3-4 रिजल्ट नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, और ये मेरा पैशन है पढ़ाना। और नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा फॉर्चून लेकर के इसलिए आया, बिकॉज आई एम एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विथ माई जीएस स्टूडेंट्स एंड दे आर ए बिट अट्रैक्टेड कि ओ लगता है यार कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। अदरवाइज ज्योग्राफी क्रिएटेड फियर, लोग आते हैं और पढ़ा देते हैं कि ये 100 रिवर है, ये माउंटेन है, ये इसे टकरा गया इसलिए ये बन गया। ये चल रहा है ज्योग्राफी में, सब जगह यही चल रहा है। हम तो देख देख करके सोचते हैं कि अब क्या करूं मैं इन चीजों का। बट दिस हाउ आई सेड नो नो, आई मीन आई नीड टू बी इन योर जीएस बैचेस आल्सो, एंड इवन इफ आई एम देयर फॉर 7-8 days, at least people will have little taste of geography, कि ज्योग्राफी में तो कॉन्सेप्ट था यार, ये हम लोग क्या कर रहे थे इसमें। एंड आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट there is no question on mapping. I will stop you from doing mapping. मुझे मैप मास्टर्स नहीं चाहिए क्लास में, समझ गए? If there are 2 questions in PT from world map, it could be done with wisdom through the doors of current affair. Pass through the tunnel of current affair, you will get the mapping questions. And don't do this idiotic work of taking the atlas and start cramming all the rivers of the world and mountains of the world. This is self-destruction. You got this point? I will ask you not to do map, number 1. Not to memorize any fact. Don't cram the names of the mines, names of the numerous rivers, numerous ranges. I will hold you from cramming facts. सबसे पहले तो ये करना है, अपने आप को सेव करना है यार उससे। नेवर एवर एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। दे नेवर आस्क हु इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग माइन इन इंडिया। ऐसा पूछता है क्या? कभी नहीं। अरेंज द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। I can't see any question like that in last 20 years. Show me one. मुझे एक दिखाना। Then why you do that? Why you are hell bent upon collecting those facts and memorizing them? तो वो नहीं करना है। This kind of mapping, this kind of fact files, इसको avoid कर दो। Ultimately questions क्या आएगा? The change in the sea surface temperature and its impact on weather. तो क्या पूछा है ये बताओ? ये पूछा कोलकाता का एवरेज टेम्परेचर क्या है? नहीं पूछा ना। पूछा ना कि ग्लोबल वार्मिंग का सी सरफेस टेम्परेचर पर क्या इम्पैक्ट है, और सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होगा तो वेदर पे क्या इंपैक्ट है। ये देखो क्वेश्चन है यूपीएससी का। और हम लोग ज्योग्राफी में कर क्या रहे हैं? टेम्परेचर कितना है, अरेबियन सी का टेम्परेचर कितना है? वो 27, नहीं वहां 29 लिखा है। ये क्या हो रहा है? विल आर दे गोइंग टू आस्क यू द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अरेबियन सी? नो। रेड सी? नो। दे विल आस्क यू द salinity of Dead Sea? No. Then why you memorize? Simply remember that Dead Sea will have one of the highest salinity. That's it. What are the causes of higher salinity? This could be asked. नहीं, वो खुद ही लिख देगा कि Dead Sea has the highest salinity among all the, वो खुद ही लिख देगा। और तुमसे पूछेगा कॉज क्या है ये बता दो। तुम क्वेश्चंस चेक करो, उस
ओशियन करंट को मैंने विंड सिस्टम से पढ़ाया है और ऑप्शनल में वही आया है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि ओशियन करंट्स आर जनरेटेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंसेस और सैलिनिटी डिफरेंसेस और द प्रेशर ग्रेडियंट और ऐसा नहीं है। आई हैव गिवन देम द फॉर्मूला Z into D into G. Z is the depth of water, D is the density of water, G is the acceleration due to gravity. So I bring enough physics into it, but then I tell my students, beware of it. The question will be ultimately finally on wind and that is what exactly came. समझे? कि टीचर का एक विजडम होता है कि इफ एट ऑल एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन विल बी क्राफ्टेड। वो टीचर का एक विजडम होता है। इट कम्स थ्रू अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ वास्ट रीडिंग। एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क? मुझे तो लगता नहीं कि डाउट्स कभी रह जाता है। तुम देखते हो इवन इन जीएस क्लास मेरे पास कोई नहीं आता है। कोई आता है क्या? कोई नहीं आता है। बट ऑब्वियसली आफ्टर द क्लास आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 hour. यू कैन कम एंड आस्क एंड वी कैन डिस्कस. यू कैन टेक माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन गिव मी वॉइस मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड यू बाई वॉइस मैसेज ओनली. तुम टेक्स्ट करना, हम वॉइस मैसेज में रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट इज माई मॉडस ऑपरेंडी. उसकी चिंता नहीं करो. इंटरेक्शन एंड सारे स्टूडेंट मुझे कभी भूलते नहीं है, फिर एक अलग रिश्ता बनता है. तो क्वेश्चन के बारे में मत सोचो. एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? और मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार कमर में. नहीं, मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे जाना था वो. तो आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू यू फॉर 5-10 minutes and then leave, but somehow it continued. चलो, finally I will sum up something. See guys, geography is a great subject. Please take geography and you will never repent. I am a traveler. What makes me a traveler? Geography. What makes me a different person from the other? Geography. बोलो. कोई फर्क नहीं है. State. देखो, once you have learned what is soil genesis, what is the typology of the soil, what nutrients and how the nutrients are generated in the soil. When you learn all the theoretical part, whether it is West Bengal or Bihar or UP or Rajasthan, you can apply them. Apply by yourself. And the best idea is that you can come with the state syllabus. I am all yours. I am available. बड़ा गंदा टर्म है, I am available. बदनाम हो गया ये टर्म. Are you available? अब ये तो I am always there. चिंता नहीं करो. Come with the syllabus. Spend some time. I will give you the insight what to do. I will give you reference of the local books also. Because some of the West Bengal writers are terrific writers. पृथ्वी रॉय, साधु करण, पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी उन्हीं का लिखा हुआ है. समझे? आई एम सो इनरिच्ड फ्रॉम देयर लिटरेचर. अरे मैं हार्डकोर ज्योग्राफी का आदमी हूँ यार. मैं वो नहीं हूँ कि कल उधर पढ़ा रहे थे. आई एम हार्डकोर ज्योग्राफर. तो चिंता मत करो. मुझे पूरा आइडिया है बंगाल का, तमिलनाडु का, हैदराबाद. आई स्टेड 2 years. I myself did my MSc Geography from Chennai University. I have some flavor of Chennai, some flavor of Hyderabad. My career started in Hyderabad. Pune mein I had 3 to 4 workshops, massive workshops. एक library था, there was a big auditorium. Chitodkar sir was there. They will invite me.
Great days, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 I decided not to teach. मैं बहुत थक गया था actually. I had GS Academy, Center for General Studies, 2 academies for GS, English and Hindi medium. English medium में my colleagues were Shubhra ma'am, Balyan ji, Pawan Kumar. They were all my colleagues teaching in CGS. I had a publication, Contemporaries, whose magazine निकलता था. So I was among a lot of work. Then 4 batches of geography, 2 in Mukherjee Nagar, Hindi and English. यहाँ 2 English. मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा काम करते करते. तो one fine morning I got up. मुझे लगा कि मेरे कॉर्प्स को लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. मेरा मिसयूज हो रहा है. मेरा क्या हो रहा है लाइफ का. मैं रात को बैठ के रोने लगा बुरी तरह से. मैं सोचा कि ऐसे तो either you could be a manager or a teacher. You cannot be a teacher and a manager both. By soul I was a teacher. But I was trying to manage all these organizations and institutions, and I wanted to fly bigger and bigger. I started constructing colleges. वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है. Finally मुझे लगा कि हमसे होगा नहीं. Next day I closed down. करोल बाग बंद. अभी जिसमें एक IAS का चलता है ना लुकमान, वो मेरा ही तो बिल्डिंग है. अब तुम लोग का जनरेशन भूल गया. लोगों का बहुत स्मॉल मेमोरी होता है ना चीजों का. क्या? हाँ, नए लोग. नाम? हाँ, नोट्स तो चल रहा था. नोट्स वाज वेरी पॉपुलर. नोट्स वाज स्टिल पॉपुलर. बट देखो, व्हेन यू डोंट टीच फॉर 6 years, योर ओल्ड नोट्स बिकम इररिलेवेंट. नहीं. What was sold in the market was 2012 notes. That has become completely irrelevant. Syllabus was revised, new topics added. हाँ, tropical cyclone will remain the same. The new topic was channel morphology. अब इस पे तो नोट्स नहीं था ना. तो खैर, लीव दैट ऑल पार्ट. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ जाता है. छोड़ो ये सब स्टोरीज. देखो, ज्योग्राफी, his question is so interesting and this will be useful for all of you. Say you prepared for 2023. You took classes for 2023, but you are writing mains in 2025. What to do? Do nothing. The same notes are valid, except you have to collect the new handouts. I'm working with 3 mechanisms. A, there is a traditional booklet. B, the class notes, which runs in the class times. And third is the handouts. The purpose of the handout is anything new coming in the newspaper, new relevant things, that will be given in the form of handouts. Samjhe? And there will be a workbook also. I got the idea of workbook. Now, all of the institutes are adopting it. My workbook will be about, like geomorphology, you have been given 70 questions, print किया हुआ है पहले से. You have to scribble the points there. वहीं पे points से scribble करके बनाओ. Workbook तुमको मिलेगा. तो even if you are writing in 2027, भगवान न करे इतना लंबा हो, but time हो गया. हाँ, बच्चे आ गए. मुझे जाना होगा. मुझे धक्का मार के बाहर निकालो, ऐसे नहीं निकलेंगे. वो हैंडआउट्स हमसे मिलेगा और क्या. यू विल बी इन टच विथ मी. क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा? तुम लिखोगे और उसका करेक्शन होगा, टेस्ट होगा. जो टेस्ट होगा उसमें कैटेगोरिकली बहुत कुछ लिखा रहेगा कि ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किया, ये पॉइंट्स करना है. उसके लिए चिंता नहीं करो. चलो, ओके गाइस, थैंक यू. See you on 1st November.